दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मूलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार आप सभी को। आज हमारे साथ क्लिनिकल आयुर्वेद के इस सेशन में अभी जुड़ेंगे हमारे साथ केरल से डॉक्टर वीसी दीप सर, जो पंचकर्म के एक बहुत नामी व्यक्ति हैं और काफ़ी उनका काम है। और अभी हम जब तक वो उनसे जुड़ते हैं, मुझे लगता है शायद वो भी जुड़ने ही वाले होंगे। आप अपने सब विषय से संबंधित प्रश्न भी आप उनसे कर सकते हैं। उनका जो प्रेजेंटेशन है वो वात व्याधि पर विषय पर है। तो वात व्याधि विषय पर पंचकर्म चिकित्सा का प्रभाव, ये उनका विषय है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी उनके साथ अभी सेशन में आप सभी जुड़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इस सेशन को आप सभी एंजॉय करेंगे। रविवार का ये सत्र है। उम्मीद है कि मैं देखता हूँ उन्हें, मैंने जस्ट फिलहाल आप आज का जो विषय है वो वात व्याधि में पंचकर्म चिकित्सा का प्रभाव है। मैं एक बार उनसे संपर्क करता हूं कि वो क्यों नहीं जुड़ पाए हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब तक वो जुड़ते हैं तब तक पंचकर्म या फिर किसी और विषय पर आप परिचर्चा कर सकते हैं। अगर कोई आपका तब तक कोई केस है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं तब तक उनको जोड़ने का प्रयास करता हूं। यदि कोई अभी फिलहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो अरविंद पाठक जी, तब तक जब तक वो जुड़ते हैं तब तक आप संभाषा चलाइए। तब तक सर डॉक्टर सीमा त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। वैद्य सीमा त्रिपाठी जी, आप कुछ बताएंगी, हमें ऐसा अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है। सीमा जी, आप सुन पा रही हैं क्या? वैद्य सीमा जी नहीं सुन पा रही हैं। वैद्य कंचन जी आप कुछ बताइए अपने केसेस। कंचन जी शायद नहीं सुन पा रही हैं। आपको होश बना देता हूँ, 1 मिनट। हाँ सर, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा थोड़ी देर बाद, मैं आ जाऊंगा। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी, आप कुछ बताइए वात व्याधि में अपना अनुभव। बस बहुत आ रही है। प्लीज अपने अपने माइक को म्यूट रखिए। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी, आप कैसे हैं सर? सर प्रणाम, बढ़िया हूँ सर, आशीर्वाद है आपका। आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट आ रहे होंगे अभी आजकल। नहीं सर, अभी तो मैं बेंगलोर आया हूँ मेरी बेटी के पास। बेंगलोर? मरीज, अच्छा जी, मरीज के भी टच में नहीं हूँ सर इस समय। तो बेंगलोर में तो बारिश हो जाती है कभी भी? हाँ सर, बहुत बारिश हो रही थी यहाँ जी। अभी, आज भी हुई थोड़ी बहुत जो है जी। तो इसलिए बस इस समय सर खाली जो है मैं श्रोता के पंक्तियों में बैठा हूँ। जी। डॉक्टर संजय जी कैसे हैं सर? डॉक्टर संजय जी। सॉरी सर हाँ, अच्छा हूँ सर। जी, आप लोग कुछ बताइए। जितेंद्र कुमार जी, डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव जी, डॉक्टर कुसुम जी, माधुरी जी, कुछ बताइए, अपने केसेस बताइए कृपया। सर जी, मैं कुछ बताऊं सर? हाँ बताइए सर, आपका जो आज लेक्चर थोड़ी मैं अटेंड नहीं कर पाया, बाद में मैंने देखा लेक्चर को। हाँ। तो गंधक द्रुति के बारे में सर मैं उनसे ही लेता हूँ। सर जुड़ गए सर, आप आएंगे सर? हेलो सर। हाँ सर बताइए। हेलो सर, डॉक्टर नवीन बोल रहा हूँ सर। हाँ आप बोलते रहिए सर। हाँ सर, काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।
जैसे हाँ। आपने बताया सुषमा त्रिफला, उसके साथ में मैंने पेशेंट को देना चालू कर दिया। हाँ। एक पेशेंट आया था, काफी स्किन स्पेशलिस्ट वगैरह उनके पास जाके, उसका घाव था सर, यानी पोट्री के ऊपर बोलते हैं ना, काफ मसल के ऊपर बड़ा हाँ। सा एक तलवे के जैसा घाव था, वो भर नहीं रहा था काफी दिन से। डायबिटीज वगैरह कुछ नहीं है पेशेंट को, 50 इयर्स का पेशेंट है। हाँ। तो सर मैंने उसका गंधक द्रुति अप्लाई करने के लिए दिया, 10 बूंद उसको जो थोड़े पाव कप दूध में, हल्के गुनगुने गर्म दूध में पीने के लिए दिया है। और जी। सर मैंने उसको सुषमा त्रिफला जैसे आपने बताया, मैंने उसको टैबलेट दे दिया। जी। सर इतना सरप्राइज हुआ कि 20 दिन के बाद उसका जो तलवे का उतना जो जख्म था, वो जी। सर जख्म क्लीन होके, मैं तो बोलता हूँ कि थम जो होता है ना सर, थम जी। थम के उतना हो गया। मैं भी सरप्राइज हो गया, पेशेंट भी काफी चलिए, सरप्राइज हो मैं गया। आप सभी को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ आज के हमारे जो एक्सपर्ट स्पीकर हैं डॉक्टर वीसी दीप सर, वो यहाँ जुड़ चुके हैं, जिनको आप सुनने के लिए जो है वो बेकरार हैं। और पंचकर्म में सर का बहुत बढ़िया जो है एक एक्सपर्टीज है। ये हमारी क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा के जो पाठक हैं, जो दर्शक हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, उनके लिए बहुत एक अवसर है कि डॉक्टर वीसी दीप सर जो हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं आयुर्वेद नेशनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर पंचकर्मा, चेरुथुरुथी, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरला में। और आप जानते हैं कि केरल का वो संस्थान जो है वो पंचकर्म के लिए बहुत माना जाता है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम सर। यहाँ पे भारत भर के वैद्य लोग जुड़े हुए हैं सर, तो थोड़ा सा क्लिनिकल पंचकर्म में के बारे में आप थोड़ा सा, आप वात व्याधि आज विषय है और पंचकर्म, मैं आपको सर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन भी दे देता हूँ, और आपको होस्ट भी हैं इस सेशन के। जी वेलकम सर। नमस्ते सर। नमस्ते, थैंक यू डॉक्टर नवीन जोशी जी। सर थैंक यू तो हम आपका बोलेंगे सर कि आप अपना हमें ज्ञान का वर्धन देते हैं। और हमारे साथ पूरे भारत के वैद्य लोग जुड़े हुए हैं जो पंचकर्म जानते हैं, समझते हैं। तो आज उनके लिए अवसर है केरल में, और बहुत सारे सवाल जो भी आपके मन में हो बाद में आप पूछेंगे। जी सर। सर ओके ओके। सेशन हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनियर के रूप में करेगा, थोड़ा सा मैं प्रेजेंट पहले, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनियर के रूप में करेगा। वो पीपीटी ऐसे नहीं है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके अनुसार में मेरा नॉलेज के अनुसार में बात करेंगे। ठीक है सर। फर्स्ट थिंग ये है वाद व्याधि एंड पंचकर्मा, ये है हमारा टॉपिक। वाद व्याधि के बारे में देखने पर हमको ये पता चलते हैं क्यों वाद व्याधि आ रहा है, इसके बारे में हमको एक नॉलेज होना चाहिए। मतलब जनरली क्या होते हैं, एक गृद्रसी और बैक के एक सयाटिका, उसी तरह के एक बीमारी होकर एक आदमी आ जाएगा, वो मॉडर्न वाला सब लोग पूछते हैं क्यों कुछ गिर पड़ा, फॉल ऐसे कुछ हुआ है, वो उनका कारण सोचने का काम खत्म हो गया, और कोई उसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा। वो फॉल नहीं है तो फॉल नहीं है ऐसे लिखे, बाकी कोई कारण नहीं है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार बहुत कुछ कारण बोला है, वो पहले देखना है। उसी में बड़ा चीज ये है, हमारा आयुर्वेद का सर्वरोग निदान चैप्टर पर बोला है, वो सभी के बारे में हम ध्यान से पूछना चाहिए, ऐसे तो हमको निदान मिल जाएगा। निदान मिल गया तो हमारा ट्रीटमेंट इसी है, उनका निदान परिवर्जनम चिकित्सा इसी तरह हमको कर सकते। तो देखिए हमारा आयुर्वेद में बोला है तिक्तोषण कषाय अल्प रूक्ष प्रमिद। सर अनम्यूट कर लीजिए, सर अनम्यूट कर लीजिए, एक मिनट सर अनम्यूट कर लीजिए, इधर सब हल्ला मचा रहे थे तो मैंने म्यूट किया। जी जी सर। जी सर। तिक्तो हमारा निदान में बोला है तिक्तोषण कषाय अल्प रूक्ष प्रमिद भोजने धारण उदीरण निशा जागर अत्युच्च भाषणे क्रियादियोग भीशोग चिंता व्यायाम मैथुने ग्रीष्म अहोरात्र भुक्तांते प्रगुप्यति समीरण वाद is increased, वाद विशेषण is occurred due to these reasons. So whatever is there, sometimes it may be gridrasi, sometimes it is pakshavada, sometimes it is ardhida, facial palsy, whatever it may be, the nidana is to be inquired.
That is the main thing we have to do. For that purpose, we have to ask these things. So how to ask these things? तिक्तोषण कषाय, तिक्त कटु कषाय रस का अमितोपयोग, अत्युपयोग, वो है एक रीजन। तिक्त रसा और कषाय रसा हम ज्यादा से ज्यादा नहीं यूज करते हैं, लेकिन कटु रसा, अचार ये सब कटु रस में आते हैं। कटु रस का अत्युपयोग हम बहुत करते हैं, वो कम करना पड़ेगा। तो हम पूछना है कटु रस, अचार एक्सेट्रा आप लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। मिर्ची, एक्चुअली रेड चिल्ली बहुत हार्मफुल चीज है। वो रेड चिल्ली का ज्यादा से ज्यादा उपयोग से वो वात व्याधि आने के चांस है। एक दिन 2 दिन से नहीं, 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल 20 साल ऐसे हम करेंगे तो हमको ये आने का चांस होते हैं। और किसी को बैक पेन है, वो ज्यादा से ज्यादा अचार खा लिया, वो नेक्स्ट डे तुरंत उनको आने का भी चांस होते हैं। बैक पेन वाला को ये जल्दी से जल्दी बढ़ने का चांस होते हैं। तो तिक्ता कटु कषाय रस का अत्युपयोग एक रीजन है। अल्पाहार, अल्पाहार के पीछे सब लोग जाते हैं अभी, क्योंकि कितना क्वांटिटी हमको चाहिए उतना हम नहीं लेते हैं। हम सब लोग खाना थोड़ा कम करके खाने के लिए सोचते हैं, कोलेस्ट्रॉल आएगा, शुगर आएगा, ऐसे ऐसे बोलकर खाने का क्वांटिटी हम कम करके खाते हैं, वो भी गड़बड़ है। तो हमारे शरीर के लिए कितना चाहिए उतना हम लेना है, और उससे ज्यादा भी नहीं लेना, कम भी नहीं लेना। लेकिन कम लेने से वात व्याधि आ जाएगा। शरीर का धातु का पोषण, सभी धातुओं में पोषण होना चाहिए। हमारा खाना सभी धातुओं में पहुंचते हैं, रसा, रक्त, मांसा, मैदा, अस्थि, मज्जा, शुक्ला, ये सभी धातुओं में मिलने के लिए कितना क्वांटिटी चाहिए उतना हम लेना है। वहां पर हम कम करने से क्या होते हैं, हमारा लास्ट धातु स्पेशली अस्थि, मज्जा, शुक्ल का पोषण ठीक ठाक नहीं होते हैं। हमारा रस, रक्त, मांस, मेद का पोषण होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा होकर उसी में प्रॉब्लम होना शुरू करेगा। तो पोषण ठीक ठाक नहीं होते हैं। हमारा खाना सफिशिएंट क्वांटिटी, मात्राशी सर्वकाल, सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं होने से लास्ट धातु अस्थि, मज्जा, शुक्ल का पोषण नहीं होते हैं, और उसके साथ रस, रक्त, मांस, मेद का कुपोषण की तरह होते हैं। वहां पर ज्यादा से ज्यादा रुक जाते हैं, दूसरा धातुओं का पोषण नहीं होते हैं। इसी कारण से अल्पाहार से वात व्याधि होने का चांस होता है। तो हमारा खाने का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमिताशना वर्ड इसी लाइन पर लास्ट में बोला है, प्रमिताशना, लेट फूड हैबिट। खाना समय पर नहीं लिया, उसी समय पे भी ये सेम प्रॉब्लम होते हैं। समय पर लेने से सभी धातुओं को पोषण ठीक ठाक होते हैं, समय पर नहीं लिया, लेट खाने से पोषण ठीक ठाक नहीं होते हैं। अस्थि, मज्जा, शुक्ल धातु का पोषण ठीक ठाक नहीं होते हैं, वो वहां पर अस्थि क्षय होते हैं, मज्जा क्षय होते हैं, वो वात व्याधि का एक रीजन होता है। तो समय पर खाना लेने से वात व्याधि नहीं आएगा, समय पर नहीं लेने से वात व्याधि आने का चांस होता है। अल्पाहार, प्रमिताशन, ये दोनों वात व्याधि का कारण है। तिक्तोषण कषाय अल्प रूक्ष प्रमिद भोजन ही, रूक्षाहार मेन reason, one of the main reason is rukshahara. Rukshahara means in my observation it is the observed that those who are not taking milk and ghee in sufficient quantity, those who are not taking sufficient quantity, not taking insufficient quantity, they are prone to have vata vyadhi. So in Acharya Rasayana it is clearly mentioned nityam kshira gridashinam, daily milk and ghee is to be taken, nityam kshira gridashinam. लेकिन कुछ लोग ऐसे सोचते हैं मिल्क लेने से प्रॉब्लम है, घी लेने से प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल आएगा, ट्राइग्लिसराइड आएगा, ऐसे ऐसे सोचकर वो लोग कम खाना समटाइम्स वो बिल्कुल नहीं लेते हैं, और हार्ट अटैक आने का कारण भी ये बोलते हैं
इसी कारण से इसी से खाने में दूध और घी का उपयोग बहुत कम करते हैं, नहीं लेने का भी आदत बहुत लोगों में। तो ये भी वाद व्याधि का एक कारण है। एक्चुअली हम गलत रास्ता से चलते हैं मुझे लगा, क्योंकि हार्ट अटैक का कारण घी है, मिल्क है, ऐसे हमको बोल नहीं सकते। वहां पर भी ये प्रमिताशना, लेट फूड हैबिट, ये सब उसी में कारण होते हैं। तो late food habit is one of the main reason for heart problems also. So therefore we have to take food in time, then only these type of so many vada vyadhis will not occur. That is a main reason. Untimely food is the main reason. So heart attack means snigdahara, oily substance, that is there among everybody's mind. So that is not there. It is the main reason is untimely food habit. And those who are taking ghee and milk regularly, they will not get this type of problems, because their blood vessels are oily in nature and they will not be attacked with this type of problems. So I feel that Rukshahara, those who are not taking milk and ghee, especially I have observed in Apabahuga type conditions. Apabahuga means one person is unable to raise his hand that properly. That condition, especially ladies, when we ask them how much quantity of milk you are drinking, then they are saying that I am not at all drinking milk. That is the main reason. And in our treatment also I have observed Prasaranyadi Kshira Kotha is very effective in Apabahuga type condition. Prasaranyadi Kshira Kotha, Prasarani, Masha, Bela, Rasona, Rasna, Aushadam, Prakodhidam Tadamba, Pibandiye Kshira Bujo, Nihandi, Marudvikaran, Apabahugam Cha. So in general Vada Vyadhis it is effective, and especially in Apabahuga it is mostly effective. So that in that condition, we have to give Prasaranyadi Kshira Kodha. The Kodha along with the Kshirahara. In that manner it is told. So we are giving Kshira Kodha of Prasaranyadi. Then Apabahuga will relieve very soon. So those who are not taking milk, they are prone to get Apabahuga type conditions. Therefore, I have in our treatment itself, you can see that in a Vada Vyadhi treatment, mainly Sneha, Sweda therapies are mainly mentioned, because this Rukshata is to be removed. For removal of Rukshata, Snigdhata is needed. So those who are not taking Snigdha substances, not including Snigdha substances in food items, they are prone to have this Vada Vyadhi. So first we have to analyze the Nidana of Vada Vyadhis, then only we can treat it properly. Otherwise, we will give some medicines, but we are not looking Nidana, then it is problematic. So modern persons, they are asking only one Nidana, whether you had a fall or not. That is there in modern science. But in Ayurveda, these all points are to be considered. Another thing, Dharana, Udirana, Nisha Jagara, Atyucha Bhashanei. These also Nidanas of Vada Vyadhi. Vega Dharana, Udirana, Vega Udirana, Dharana, Udirana, Nisha Jagara. Night awakening is an important reason for Vada Vyadhi. Nisha Jagara, Atyucha Bhashanei. Those who are talking loudly, they are prone to have Vada Vyadhis. Dharana, Udirana, Nisha Jagara, Atyucha Bhashanei. Kriyadi Yoga, Bhishoga, Chinta, Vyayama Maidhunei. Kriyadi Yoga. So Ayurvedic Nidana, Ayurveda Acharyas are always mentioning them
harmful effects of panchakarma also. Sometimes kriya adiyoga, vamana has occurred, but it is not stopping properly. That is kriya adiyoga. Virajana has occurred, but it is not stopping. That is the adiyoga of virajana. So kriya adiyoga, bhi, shoka, chinta, vyayama maithune, bhi, shoka, chinta. So these things are related to mental problems, mental tension, etc. Fear, excessive thought, etc. are creating vada. It is increasing vada in our body. So moderate thinking that is needed. Fear, etc. should not develop in our mind. That is a courage in nature is to be developed in that manner. So we have to develop in that manner, then vada will not increase. So kriya yoga, bhi, shoga, chinta, vyayama maithune, vyayama and maithuna. These are increasing. Excessive indulgence in sex, that is one of the reason. And excessive exercises. Exercises are to be carried out. Vyayama is needed to our body. But excessive exercises are harmful to our body. That is a increasing vada. So the person going to gym and to get the value of gym, whatever he spent for that gym, etc. To get that, he will do exercises for 2 hours, 2.5 hours, and very strainful exercises that person will carry out. That itself is creating problem to that person. So excessive exercises is problematic. Ayurveda, yoga, all are interrelated. So here, if you are doing yogasana, pranayama, dhyana, meditation, etc. regularly, that is best exercises one can give. That is good for our body, and it will not create any problems. In other cases, sometimes a person may do for this exercises, but they cannot continue it a long time. That itself also will create problems. So moderate exercises are advised to a person. So these things are to be considered. Kriya yoga, bhishoga, chinta, vyayama maithune. Grishma horatri bhuktande pragupyadi samirana. This is general conditions. In Grishma Ritu, summer season, vada will increase. Ahoratri bhukta ande, end of the daytime, evening time, vada will increase. Bhukta, that is after digestion, last part of digestion, vada will increase. So in that manner, general vada visheshan also there. So it is not creating that much problematic diseases. Initial points, that is excess intake of mirchi, that is our kadu ahara, that is one of main reason. And then rukshahara, non-intake of oil, non-intake of milk, ghee, etc. These are another reason. And insufficient, not taking sufficient quantity of food, main reason for vada vyadhi. And pramidasana, late food habit. These are to be considered. If it is there with the person who is suffering with back pain, sciatica, hemiplegia, these are to be corrected initially. Then only our line of other treatments will come actually. So first line of treatment is nidana parivarjana. But in Gridrasya, etc., it is very easy to correct actually. Then the person can walk properly, that all problems will relieve actually. In Pakshavada, etc., it is not that much. If Nidana Parivarjana will give complete relief, that we cannot say. But the second occurrence, etc., that sometimes Pakshava, hemiplegia, etc., will occur second time. So these things can be prevented by Nidana Parivarjana. So that is to be kept in mind. That is best for our treatment purpose. So
first thing I want to say in this point is Nidana Parivarjanam Chigilsa. Nidana Parivarjanam Chigilsa. And whenever a Vadavyadi person comes, then we have to ask these all things. Timely food. Related to timely food, I am giving more stress. At what time you are waking up? At what time you are taking bath? What time you are taking breakfast, lunch, dinner, etc. That I am asking. Whether they are taking evening bath or not, that also I am stressing, because these things are very important in day-to-day life. So if we are not following this daily regimen properly, that itself will create diseases. Sometimes it will come in the form of sciatica. Sometimes it will come in the form of hemiplegia. Sometimes it will come in the form of Alzheimer's disease. Sometimes it will come in the form of Parkinson's disease. So anyway, we have to follow daily regimen in proper manner. Then only diseases can be prevented. So for example, some persons are taking baths before 6 o'clock and they are taking breakfast by 8:30 or 9. So around 3 hours gap is there in between bathing and breakfast. That is problematic. So in Ayurveda, we are studying Snanam, Deepanam, Ayushyam, Vrishyam, Urja, Balapradam. Snanam is, bathing itself is Deepana, Agni Deepana. So Agni Deepana is there, then immediately food is to be given. So food is not giving whenever Agni is Deepta, that itself is creating problem. So we have to give food when Agni is Deepta. Tada Agna Udrikte Prayunjida Aharam. Agni is Deepta, at that time Ahara is to be given. So Deepta Agni is a very important point. Agni Deepta is there, then food is to be given. So taking bath by 6 o'clock and taking breakfast by 9 o'clock, that is not acceptable. So within these 3 hours, so many changes are occurring in our body that may create sometimes thyroid problems, sometimes increased cholesterol. In that may sometimes diabetes. These things are occurring if we are not giving food in time. So Pramitashana is one of the main reasons for so many lifestyle diseases. So and morning, sometimes some are okay in the morning. Lunch time, most of the people are taking by 3 o'clock. They are not getting time in that noon time. So that itself is also creating so many problems. So in that manner, and dinner, late dinner habit, so many are following. That also creating problems to our body. So untimely food habit is very, very problematic. And some persons are taking bath in the evening. Evening means by 6:30 they are taking bath, and nothing is taken during that time. They are taking dinner by 9 o'clock or 10 o'clock. So around 2.5, 3 hour gap is there in the evening also. That also will create problems. So Agni is to be protected any manner. So timely food is very important, and therefore our dinacharya is to be corrected at first. By correcting dinacharya itself, we will get good results. That is one of the thing I have to convey. You can post your questions here. Whenever. Thank you, sir. Thank you. If there is any question, you can raise your hand and ask with Dr. V.C. Deep, sir. Yeah. अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करिए. I will give you an opportunity to ask the question directly. Yeah. कोई प्रश्न है आपका? You can post in the chat box also. मीनल गुप्ता. Okay. मीनल गुप्ता जी, just मैं आपको पहले unmute करता हूँ. Yes. You just give your introduction and then ask the question. Yeah. प्रणाम सर, डॉक्टर मीनल गुप्ता बोल रही हूँ आगरा से.
सर पंचकर्मा का ही एक छोटा सेटअप चलाती हूँ, इसलिए थोड़ा सा पंचकर्मा का केरला से ही मैंने ट्रेनिंग लिया था। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि हमारे पंचकर्मा के प्रोसीजर्स को करने के बाद भी पेशेंट्स रिलैप्स में आते हैं, जैसे कि आईवीटीपी का पेशेंट है जो कि स्लिप डिस्क कहलाता है। ये पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं इस सीजन में, और अब तो बच्चे भी आने लगे हैं। मैंने इससे पहले तो ओल्ड एज के पर्सन आते थे, लेकिन अब यंगस्टर्स में भी ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा आने लगी है। तो वहां पर सर, आर यू कंफर्टेबल विद द हिंदी? Yes, yes. ओके। लंबर स्पॉन्डिलोसिस या फिर लंबर डिस्क प्रोलैप्स, सब क्या क्या हम प्रोसीजर्स करें, और उसके बाद सर रिलैप्स ना हो उसके लिए क्या करें? क्योंकि रिलैप्स बहुत ज्यादा आते हैं। ट्रीटमेंट हो गया पंचकर्मा का, अभ्यंगम सृजन के बाद सरकटी वस्ती और सभी वस्तियां लेने के बाद, जैसे कि अनुवासन वस्ती और नेहरू वस्ती लेने के पूरे 4 वीक्स का ट्रीटमेंट के बाद मैं ऑयल बाथ भी लेती हूँ, फेशियल भी कराती हूँ। उसके बाद पेशेंट को प्रिकॉशंस भी बोले जाते हैं, बट वो रिलैप्सिंग कई पेशेंट्स में होता है। तो वहां पर हम उन्हें क्या कर दे सकते हैं, जैसे कि उनका बैक बोन्स का जो बैक मसल्स है उनका स्ट्रॉन्ग वो स्ट्रॉन्ग हो सके और रिलैप्स ना हो। Actually, here, whenever we see the MRI or some other X-ray, MRI, we can see the problems in the disc. So we can see the problems in disc. So that time we are treating the patient, and the patient is getting relief. But disc prolapse is corrected or not, that we cannot guarantee actually. Patient is getting relief. So what I am saying here, this pen is there. I am giving a support that pen should stand there in that manner. So what is happening? It will not stand there. It will गिर पड़ेगा. It will lie down. That is that it cannot stand there. So that means here it is compared with that problematic disc or problematic vertebra in that manner. So what we are doing, we are giving some support to this pen from other sides. That means it will not fall down. It will stay there. That is because of the nearby muscles are strengthened. Therefore, the vertebra or disc will not create any problems. So our line of treatment is giving support to the disc or vertebra with the nearby muscles. That is our line of approach. And many are getting result in that manner. So MRI result is not negative. That means it is the same manner, but even though patient is getting relief. So you asked the first point, I understood that it was occurring in older age, but nowadays it is coming to younger age people. At the age of 20 also, so many are getting. So anyway, first you ask their life dinacharya first, then try to correct it. Sometimes by correcting dinacharya itself, it will be corrected. Otherwise, we have to give some medicines. That anyway, in sciatica, back pain conditions, our Ayurvedic medicines are very effective, and Panchakarma also effective. So one thing I can say, in our Ayurveda hospital Cheruturthi, we have conducted various studies on Gridrasi. Gridrasi or sciatica, Snehapana was given with different oils. Snehapana with different oils. So sometimes Kshira Bela was given, sometimes Dashamula Bela was given, sometimes Mahamasha Taila was given. Anyway, we have given various oils
for Snehapana. And after Snehapana, Bashpa Svedana was given for 3 days. Then Virejana was conducted. So by this itself, many of the problems are solving. And after that, we have conducted a Vasti, regular Vastis in Vaitarana Vasti. In that manner, regular Vastis were conducted. In another study, माधु तैलिका वस्ती योग वस्ती के रूप में दे दिया था, माधु तैलिका वस्ती दे दिया था. And along with that, Patrapinda Sweda was given. In some cases, Kadi Vasti was given. In some cases, Rajyapana Vasti was given. In some cases, Shastika Shali Pinda Sweda was given. So these all Brahmana type therapies can be given to these Gridrasi patients, and they are getting complete relief that we have observed. So we have one assessment criteria of 100 marks related to considering all the problems of sciatica. So Gridrasi, that is SLR test is maximum mark was given. So in that manner, out of 100, most of the patients are coming with 75 mark. Problems of 75 mark problem is there. And whenever they are getting discharged, that 75 is reduced to 10 or 0. In that manner, they are getting good relief. So that is the result of Gridrasi cases. So we are managing with all these things: Snehapana, Bashpasweda, Virechana, then Vastis, Madhudalika Vasti or Vaitarana Vasti or any type of Vasti, and then this along with the Vasti, mostly Patrapinda Seda conducting. After that, Shastika Shali Pinda Seda. And sometimes Kadi Vasti in the last phase. Sometimes Pidichil or Kaya Seka we are doing to some patients. So anyway, patients are getting good relief in all the type of Gridrasi cases. Sometimes their MRI may not change. MRI result may not change, even though patient symptomatic relief is there to all patients. That I can say. That age is no bar. It will occur to any person. Those who are having the nidana of Tiktoshana Kashaya, Alparuksha, Pramida Bojane, all the nidanas are performing, then there is chance of getting Gridrasi type conditions in the early stage itself. Next. So Arvind Saxena ji, what is your question? You can ask here. Can we continue Ghatpana after that? That will help in strengthening the muscles. Which one? Strengthening the muscle. That is our conclusion. By these therapies, our muscles are getting strengthened, and the patient is not getting any problem in the future. That is our conclusion. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, Arvind Saxena ji. सर डॉक्टर अरविंद सक्सेना लखनऊ से बोल रहा हूँ सर. सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि दूध मिल्क के बारे में बोला, विरुद्ध मतलब क्या मतलब बात को व्रत कर रहा है, जबकि दूध को विष्टभ भी बोला गया है. और प्रमेह में भी, प्रमेह जो होता है मधुमेह भी तो एक वाद व्याधि है, वहां पे बोला गया है आश्वसुखम सबसुखम दधीनी ग्राम, दधी नहीं बोला गया है वहां पे. तो वहां पे दूध का या इस तरह की चीजों का मना किया गया है. लेकिन अगर वाद व्याधि में ही उसकी गणना की गई है, तो ऐसे में आप बोल रहे हैं कि दूध देना चाहिए और दूध जरूरी है, तो वो सर मुझे समझ में नहीं आया. ओके, दूध जरूर देना है. What is the problem in Madhumeha? दूध is contraindicated. Those who are drinking milk, Madhumeha may increase. That is there. So what I am doing, whenever I prescribe दूध, milk, I will add some medicines to it. So Bella Mula is the best choice in Vada Vyadhis. You have to put 3 grams of Bella Mula in 1 glass of milk and boil. That is best in Vada Vyadhis. And sometimes gas का problem ऐसे कुछ होते हैं उसी में, उन लोगों में, उस समय हम थोड़ा सा शुंठी भी डालते हैं. So 3 grams of Bella Mula, 1 gram of shunti. In that manner, we can put it. So Shundi Beladaya Kodha Suttavada Nibarhanam. Then that some quotations are there. So based on that, we are prescribing in this manner.
3 gram of bela churna and 1 gram of shundi churna, boil with the milk, and we are reducing that 1 glass of 200 ml of milk and 200 ml of water. We are boiling and giving and reducing to 200 ml and 200 ml at a stretch we are prescribing. That is one of the thing we can do. And in the case of Madhumeha, diabetes patients, sometimes this may increase diabetes. So what I am doing, we will put a methi powder to this, and methi powder will not increase sugar. That we have observed. And in some cases, by drinking this methi milk, their sugar is getting reduced. That also we have observed. And the patient is getting benefit. Their vada vyadhis are reducing by giving milk. So sugar will not increase and vada vyadhi will reduce. That is also observed. So anyway, milk is to be taken. Every person should drink milk. Therefore, Ayurveda Acharya has mentioned Nityam Kshira Gridashinam. Daily milk and ghee is to be taken. So in Kerala type states, it looks like Anupadesha. Anupadesha persons are drinking less quantity of milk and they are not taking much ghee, etc. So in northern areas, I have observed in Gujarat, etc., Rajasthan, in these areas, people are taking more quantity of milk and they are not getting that much amount of vada vyadhis. Vada vyadhis are very rare in other areas, I have observed. In Kerala type conditions, people are not drinking milk regularly. They are prone to have this vada vyadhis, I have observed. So milk is to be taken regularly, and in diabetes conditions, methi is to be added. Any anti-diabetic medicine is to be added while boiling milk. That is my opinion. सेकंड क्वेश्चन सर मेरा, तिक्त, कटु एंड आपने बोला उष्ण भोजन, उष्ण अल्प और चिंता भोजन जो बोला है, तो उष्ण आपने बोला, तो उष्ण तो जो है वात को समन करने के लिए हम उष्ण और स्नेह ही देते हैं, तो उष्ण से वात वृद्धि की तरफ सर आपका इशारा है। वो उष्ण आप उष्ण तिक्तोष्ण कषाय, उष्ण मीन्स कटु आहार है। उष्ण मीन्स कटु, सिनोनिम ऑफ कटु आहार. Not Ushna. Not Ushana. Ushana means Tiktoshana Kashaya. Ushana means Kadu Ahara. Ushna is one. Ushna is reducing Vata. That is another aspect. Tiktoshana Kashaya Alparuksha Pramita Bojane. Here it is Ushna or Shida is not mentioned. Ushana. Kadu Ahara is vitiating Vata. Right, sir. Sir, third question, last question, sir. All the 5 वॉइस जो बोली गई हैं, प्राणापान समान व्यायाम, ये नॉर्मल अवस्था में तो ठीक है, लेकिन ये ही विकृत वायु भी बोली गई हैं, तो अपान तो विकृत होती है तो ऊपर चलती है, लेकिन प्राण समान को विकृत की तरफ सर कैसे सोच के चलेगी, वो फिर वो अपने आशय के हिसाब से क्यों वो वहां विकृति करती है? इसमें देखिए, हमारा असेसमेंट क्राइटेरिया is little bit difficult in prana, samana, vyana, etc. We can assess based on apana vayu. Apana vayu assessment is based on our assessment of koshta. Koshta is a normal, then there is no much problems. So one example, one of my friend Dr. Prasad is saying always, we are keeping a kite that rope is in our hand, and kite that is flying in the sky. So whenever our rope, we are removing the rope and it is the kite is flying in the top, based on the base is there in our hand itself. So in the root cause is there in our apana vayu. Apana vayu is correct, then prana, samana, vyana, everything will work proper. So if apana is got damaged,
then all other values will get damaged. So apana assessment is done with our koshta. Koshtam kruro mrudur madhya madhyasyate samairapi. In that manner, we have 4 kostas are there. Krura kosta is there, that is prone to have vada vyadhis. Motion is not passing regularly. And very difficult to pass a stool. Then sometimes 3 or 4 days, once in 3 or 4 days, a stool will pass. In that manner, a person is suffering with these problems. That person is prone to have vada vyadhis. So first we have to correct this krura kosta. Whenever we are getting any small problem in our kosta, that is to be corrected initially, immediately. That itself will give good results. So assessment of kosta is very important. Apana vayu is to be corrected initially, then all other vayus will work proper. That is my opinion. Thank you, sir. So Rakesh, Gabaji, Charu Gabaji, what is your question? You just raise your hand. I will give you the chance. Yes, Charu Gabaji, what is your question? You just raise your hand, or Rakesh Drogarji, you can ask. Yeah. Charu Gabaji, yes. हेलो हेलो नमस्कार सर, वैद्य राकेश ग्रोवर फिरोजपुर पंजाब से बात कर रहा हूँ जी। सर मुझे आहार विहार के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन था। जैसे हमने कहीं पढ़ा है 1 समय योगी, 2 समय भोगी और 3 समय रोगी। तो हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का क्या कंसेप्ट है? और जो आज के विषय में है भी, एक आदमी सुबह 7 बजे उठता है और रात को 11 बजे बेड पे जाता है। व्हाट शुड हिज दिनचर्या अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा टू फिट टू अवॉइड वात, पित्त और कफ व्याधिस? Actually, this quotation is not there in Ayurvedic concept. एक समय खाना लेने वाला योगी है, ऐसे वाला quotation आयुर्वेद में नहीं है। वो दूसरा इसी से होते हैं। इसलिए आप सोचिए, आप योगी होना चाहते तो आप सुबह 6 बजे और 5 बजे उठकर 11 बजे तक काम करेंगे तो सिर्फ एक बार खाने लेने से हो जाएगा काम? ऐसे किसी को नहीं होते हैं। इतना ज्यादा काम करते हैं, सिर्फ एक बार खाना खाएगा आपको योगी की तरह मतलब सब कुछ कर सकते हैं ऐसे वाला आदमी को? हम प्रैक्टिकली देखते हैं। एक समय तो नहीं, अगर 2 समय तो चलो हम भोगी बनते हैं, और 3 समय खाते हैं तो क्या हम सभी रोगी हो जाएंगे? मैं ये जानना चाहता था। नहीं, वो भी देखिए, आप 2 बार खा लिया, वो भी मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है। कुछ लोग ऐसे करना शुरू किया था, वो 1-2 महीने का अंदर वो लोग बीमार हो गए। मुझे ऐसे नहीं लगते हैं वो इतना समय 6 बजे से 11 बजे तक काम करने वाला आदमी है तो उनको मिनिमम 3 बार जरूर लेना पड़ता है। और वो पित्त प्रकृति वाला आदमी है तो उनको बीच में 2 बार छोटा सा भी लेना पड़ेगा। ऐसे तो उनको अग्नि को प्रोटेक्ट करेगा। सुबह 6 बजे उठा तो 8 साढ़े 8 बजे का अंदर ब्रेकफास्ट लेना अच्छा होता है। वो क्लाइमेट के अनुसार थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं। वो विंटर सीजन पर थोड़ा लेट खाने पर भी चलेगा, क्योंकि उठने पर लेट होते हैं, सो 9 बजे तक लेने पर भी चलेगा। लेकिन अदर टाइम्स इट इज बेटर टू हैव ब्रेकफास्ट बिफोर 8:30 इन दैट मैनर, दैट इज द बेस्ट वन एक्चुअली। तो 8 साढ़े 8 बजे ब्रेकफास्ट लिया तो वो 3 घंटे और 4 घंटे में वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो हमको 12-1 बजे में जरूर भूख लगेगा, उस समय हम लेना है। फिर वो रात को सोने का 10 बजे और 11 बजे है तो उनको रात को सोने के पहले 1-2 घंटे पहले उनको डिनर लेना पड़ेगा। ऐसे तो उनको नींद ठीक ठाक मिलेगा। तो 8-9 बजे के अंदर उनको डिनर लेना अच्छा होता है। तो ये समय इतना हम मिनिमम लेना पड़ते हैं। वो हम लोग ऐसे करते रहते हैं। वो कोई भी ऐसे 2 बार खा लिया, कुछ लोग 11 बजे लेते हैं, उसके बाद 5 बजे खाते हैं। वो मुझे ऐसे नहीं लगा है उन लोगों का तबीयत इतना अच्छा तरह रहते हैं। वो भी कुछ 1-2 साल और 3 साल के अंदर वो लोग बीमार होने का चांस होता है। तो बेस्ट इट इज बेटर टू हैव
this 3 time meals is best, क्योंकि आयुर्वेद में 2 बार लेने के बारे में बोला, लेकिन इन फ्यूचर बाद में क्या बोला, वो तथा अग्नौ उद्रिक्ते प्रयुञ्जीत आहारम, that sentence only told अग्नौ उद्रिक्ते प्रयुञ्जीत, Agni is deepta, that time one has to take food. So according to climate it changes, so that time sometimes we have to take 3 times, sometimes 2 times, but most of the time 3 times we have to take food. And in Pitta Prakriti persons, their Agni is more Tikshna in nature, they have to take light food in between also. So 1 बजे एक आदमी लंच ले लिया, 8 बजे डिनर लेने थे, सो 7 घंटे का गैप उनको होता है, उस समय उनको बीच में कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। तो ये दूसरे एक कोटेशन है 2 बार लेने के बाद नेक्स्ट लाइन पर याम मध्ये न भुक्तव्यम याम द्वयम न लंघयेत्। याम मध्ये, याम means 3 hours, every once we have taken in after that within 3 hours we should not eat again. Yama madhye na bhuktavyam, yama dvayam na lankhet, yama madhye, in between 3 hours we have to we should not eat, but yama dvayam na lankhet, every 6 hours, 6 hours we should not cross. That means once we have taken, within that 6 hours we have to take next food. So those who are working from waking up from 6 to 11, they have to take minimum 3 times. That is my opinion. So in that manner we have to continue that. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Charu Gawa ji, or ask your question. Yeah. Good evening, sir. Sir, Okay. even I have queries regarding milk. Let's introduce yourself. Yeah. Sir, I'm Dr. Charu Gaba from Lucknow. Yes, yes. Yes, sir. So first query is like people who are having Mandagni, can they take milk? That if a person is Mandakni, first that Agni is to be corrected. We Right, have sir. Agnis. 4 Agnis are there. Tikshna Mandakni, Vishamakni, Samakni. So if a person is having Mandakni, that person is living long time, that we cannot say. Rogo sarve bhi mandakno. So mandakni person, that is to be corrected with proper medications. First thing. Tikshnagni person also to be corrected with the proper medication. Vishamagni, Tikshnagni and Mandakni coming together. That Vishamagni person, that is also to be corrected. And we have to live with Samakni. Samakni is the best thing. Whenever we eat food, that is to be digested within particular time, and again appetite is feeling, that is Samakti. So person, first they have to correct it with some our Ayurvedic churn. They have to take, if Koshta is got a problem, then Koshta is to be corrected. In both manner, we have to correct it first, then treatment is to be given. So whatever he eat, it will not digest properly. So Mandakni is to be corrected at first, then other things can be done. Yeah. Sir, for example, like in hypothyroid patients, so Agni is Mand, sir, and also with the time, osteoporosis is also very common among them. So first thing which doctors or other people they advise is to stop your milk products, milk and all foods made out of milk products. So this was the base of my query, sir. Yeah, I understood that hypothyroidism or hyperthyroidism, both are problematic, and this in my personal observation, I have seen that especially ladies, those who are taking late breakfast, they are prone to have hypothyroidism. Especially ladies, late breakfast, they are taking breakfast by 10 o'clock or 11 o'clock. They are waking up before 6 o'clock and doing all the works, then taking bath in the morning and breakfast by 10 o'clock or 11 o'clock. If they are running this habit for 1 year or 2 years, then prone to have hypothyroidism. So their acne is got damaged by this habit.
So that habit be changed. And in their medication also, I have observed after taking the medicine, Tyronome or some other medicines are there. After taking this medicine, you have to take food within 1 hour. The compulsorily doctors are saying this medicine is to be taken by 6 o'clock, then food is to be taken by 7 o'clock in that manner. Or 7 o'clock medicine, food by 8 o'clock. So 1 hour gap, within 1 hour you have to take food. So some are doing correctly and some are doing what they are doing 6 o'clock medicine, 7 o'clock some दो biscuit chai ऐसे लेते हैं. ये problem है. So those who are taking breakfast properly, 7 o'clock medicine, 8 o'clock they are breakfast. They are reducing the dosage of medicines. I have observed that. So first doctor might have written Tyronome 50 mg. Then if the person is following this correctly, then next within 1 month the dosage is reduced to 25 mg. Then next 1 or 2 months they can reduce it to 12.5 mg. Within 1 year or 6 months itself, they can stop the medicine. But breakfast should be before 8 o'clock. That is the important thing I have observed. So those who are following this thing, then they are not having the hypothyroid problems. Initial times we can correct it. But Right, sir. Thank you, sir. Now, Dhanay ji, you can ask your question. अपना question पूछिए. Dhanay ji, Jaswant Dhanay from Uttarakhand. जी सर, परिचय दे दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए. जी सर प्रणाम. मैं डॉक्टर दनाई उत्तराखंड से बोल रहा हूँ. सर आपने कहा ये सियाटिया गिरदृष्टि में स्नेह पान लेना है तेल का. ये किस टाइम लेना, कितना लेना, गरम करके लेना या yes. Cherdurti hospital, we have conducted so many trials related to this thing, and more than 600 patients were undergone Thyla Snehapana. Thyla Snehapana, various Thylas were used. Mahamasha Thyla is one among that. Another one is Shira Bella Thyla. Another one is Deshamula Bella Thyla. These are the trial drugs we have used. Now also we are giving in IP patients some various other Thylas. Mahanarayana Thyla we are giving. Various, according to the conditions, we are selecting the medicines and we are Vadashini Thyla we are giving. So Thyla Snehapana in Kerala we have given, earlier we have given 50 ml of Thyla in the initial day. Next day we will increase up to 100 ml, seeing the appetite, etc. So third day 150 ml, fourth day 200 ml. That is a general rule. 50 ml per day, increasing that manner. So maximum of 350 ml can taken by a person on the 7th day. So increasing dosage we are giving. So what we have observed, most of the time, most of the patients are coming with walking difficulties. They are in the lying posture. That itself, with the 4th day of Snehapana, they can walk. They can walk up to bathroom, no problem. That we have observed. So within that, sufficient Sneha is getting, then the person is getting relief. So increase the dosage. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. In that manner, up to 7 days, maximum of 7 days. Empty stomach, sir? Empty stomach, khali pet. Khali pet. That is mostly by 6 a.m. we are giving. 6 a.m. Morning, they are taking brushing, they are going to latrine, etc. And 6 a.m. little bit hot nature. This Thyla is heated and that it can be taken easily in that manner. At a stretch, 50 ml giving, next day morning 100 ml giving, in that manner at a stretch, little bit lukewarm oil is giving it. सर इससे नोजिया होगा तो इसमें कुछ और डाल सकते हैं?
Hey, usi ka mostly no problem is occurring, but some persons cannot take in the last days. 250 or 200 comes, they cannot take. So even though they will adjust it, so we will tell them to smell lemon. Lemon is there. Lemon, if they are smelling lemon, then that nausea can be prevented. बला अश्वगंधा दे सकते हैं सर? बला अश्वगंधा किसके लिए? बला अश्वगंधादि तैला, that also can be given for स्नेहपाना. महानारायण भी दे सकते. जी जी, ओके, थैंक यू सर. थैंक यू. मीरल गुप्ता जी, कोई और प्रश्न है आपका? पूछिए, और भी लोग पूछ सकते हैं, काफी लोग हैं यहाँ पे. जी मीरल गुप्ता जी. स्नेहपान का सर ने जो बताया सर, उसमें तेल पान कराना है या घृत भी यूज कर सकते हैं सर? घृत पान और तेल पान में से which will be beneficial for the वात व्याधि and convenient for the patient, because तेल पान. Yes. जैसे Thaila is best in Vata, therefore we have prescribed, we have given that Thaila Snehapana. Grida also can be given. In most of the time, in psoriasis type conditions, we are prescribing Tikta Grida or Mahatikta Grida for Snehapana purpose. Then that is psoriasis getting good relief by Snehapana itself. So here, there also we are increasing with this 50 ml, 100 ml in that manner we are giving. So that is one of the chance. And here in Vata Vyadhis, sometimes we will give Indugandha Grida. That is commonly practicing Grida in Vata Vyadhis. If some associated problems are there, we can select some other Kalyanaga Grida, etc. That also we can select. But generally, this Indugandha Grida is prescribing in Vata Vyadhis. Mahatikta also somewhat effective in Vata Vyadhis. Mahatikta Grida. But Tailpan is better than Tailpan is better because Vata best medicine is Taila. In Pitta, best is Grida. So in Vata Vyadhi, Taila is the best one. One more question, sir. In Abahu, we can add the Prasarani oil. Prasarani Taila we can add. Abahu ka Prasarani Adi Taila is the best one. We can add the Prasarani oil with the cheer pak. We can add that. We can add cheer in that manner with the grat also. Or the oil. Oil with the? With the cheer. If we are not having. If we are having Prasarani oil capsules, we can. Yeah. Then if in Shamana dosage we are giving, Prasaranyadi Taila can be added with the Prasaranyadi Kshirapaka. Oh, 5 ml or 10 ml is sufficient. No need to increase in this much dosage. 5 or 10 ml of Prasaranyadi Taila with the Kshirapaka we can give. Okay, sir. Thank you. Rajendra Kaur ji, what is your question? You can ask. Let introduce yourself. सर नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा पंजाब से हूँ. मुझे ये पूछना था कि अगर जो ब्रांड गृध्रसी है वो वात कफज भी होती है, वातज भी है और वात कफज दो टाइप की होती है. तो अगर वात कफज है तो उसमें हम दीपन पाचन करके क्या फिर तेल ऐड करना चाहिए पान के लिए? ये प्रॉब्लम कैंसर होते हैं. आता जाए तो मेनली पेन ज्यादा होते हैं. वादा कब्जा है तो लिटिल बिट स्वेलिंग ऐसे भी कुछ होते हैं. तो एसोसिएटेड कंप्लेंट कैंसर हमको ऑयल चेंज कर सकते हैं, एसोसिएटेड ट्रीटमेंट्स भी चेंज कर सकते हैं. एनीवे वादा कब्जा कंडीशन पर हम क्या करते हैं, शुरू में थोड़ा सा चूर्ण पिंड सेद करते हैं. चूर्ण पिंड सेद विथ कोला कुलथादि चूर्ण और युवा कुलथा चूर्ण, कोई भी चूर्ण यूज कर चूर्ण स्वेद करते हैं विदाउट ऑयल. फर्स्ट वी विल डू इन दैट मैनर. देन आफ्टरवर्ड्स व्हेन स्वेलिंग एक्सेट्रा विल रिड्यूस, then we can do Vatika
predominant treatment, that is best actually. पान के लिए भी हम Same thylas etc. can be used. We have done in that manner. The initial treatment is little bit different. So initial that kapha avaranata is to be removed, then vada, pure vada vyadhi treatment can be. Okay, thank you sir. सर एक बार आप पंचकर्म ब्रीफ करेंगे वात व्याधि का? वात व्याधि में प्रोसीड कैसे करना चाहिए पंचकर्म के लिए? एक एक डिसीज के अनुसार चेंज होते हैं. पक्षवधा कंडीशन, हेमिप्लीज कंडीशन है तो हमारे पर स्नेहपान का एक ग्रुप कंडक्ट किया है. स्नेहपाना एक ग्रुप पर स्नेहपाना, महामाष्ट तैल स्नेहपाना. So this increased dosage of Mahamashtra Thaila was given. Then afterwards Virajana, that is Bashpaseda was given for 3 days and Virajana was given. This is one of the first initial line of treatment. Then in that same condition, same case, we have conducted Vasti, Yoga Vasti we have given, Madhutairika Vasti and Matra Anuvasana Vasti. In that manner, we have conducted Vastis, Yoga Vastis, 8 Vastis we have given. Next phase, that means after Snehapana, 7 days Samsarjana Krama, afterwards Yoga Vasti was given. So in Yoga Vasti, that is a model of this Panchakarma type treatments. This is one of the line we have adopted. And in the last stage, in the after Vasti, we can give Nasya. That is another last line of treatment. And in all cases, Vamana is not possible. So Virajana is the best treatment in Pakshaghata. So this Virajana, Vasti is both times, Vanivasana and Kashaya Vasti, Niruha Vasti, both we have. And last stage, Nasya was given. This is one of the line of treatment they adopted. In another group, initially we will do Abhyanga. Generally, in most of the hospitals, patients are admitted for Pakshaghata. Generally, Abhyanga is carrying out. Abhyanga for 7 days or 14 days. Then afterwards, Patrapinda Seda for 7 days or 14 days, in that manner, that is going on. And after Patrapinda Seda, some mild Virajana is giving. This is one line, another line of treatment. And Shiro Vasti was conducted. Shiro Vasti is also one of the line of treatment in Pakshaghata conditions. Shiro Vasti was conducted. And another one group, Abhyanga, after Abhyanga for 14 days, Shastika Shaili Pinda Seda was conducted. All these groups are giving good results. All these groups are giving good results. In one of the study, it is shown Panchakarma is a little bit effective in that manner. Little bit, not statistically not that much significant. Little bit effective Panchakarma treatment. In one of the study it is shown. All the line of treatments are giving good results in our Pakshaghata line of treatments. Same manner, Gridrasi also, sciatica also. In one of the group we have conducted with Snehapana. Another group we have started with Churnapinda Seda, Abhyanga, Patrapinda Seda, in that manner. That also giving good results. Anyway, Ayurveda line of treatment is giving good relief to all these type of Vadavyadhis. So I think that your question, you got your answer. ससीना साहब पूछ लीजिए, क्या पूछना है आपने? आपने हैंड रेज किया हुआ है जी. जी सर, मेरा क्वेश्चन बस्ती पे ही था सर. जैसे हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं तो उसमें भी 3 से 4 दिन में आराम मिल जाता है. जैसे अभी बोला आपने 50 ml, फिर 100 ml, 150 ml तक गया आपका. लेकिन सुश्रुत में लिखा गया है कि पहली बस्ती वृषण और उसमें जाती है, और सेकंड बस्ती स्किन में बढ़ने के लिए जाती है, थर्ड बस्ती के बाद फिर रस रक्त आता है, फिर रस रक्त मांस में अस्थि. तो इस तरह से 9 बस्ती बताई गई है. तो क्वेश्चन हम लोग को, वैसे क्लिनिकल लेवल पे मात्रा बस्ती में 30 से 34 दिन आराम मिल जाता है पेशेंट को पेन में, और लेकिन हम लोग शास्त्रों के हिसाब से चले तो 3 दिन तो उधर स्किन और वृषण में हो गया, और फिर उसके बाद रस रक्त और मांस में अस्थि मज्जा, अस्थि तक आने में 6वां दिन लगता है, 6 और 3 9वां दिन लगता है. तो सर हम लोग कैसे, मतलब क्या अस्थि में 3 दिन में 4 दिन में पहुंच जाती है जो उसको आराम मिल जाता है, या न्यूराइन में आराम मिल जाता है?
रीजन ये समझ में नहीं आता, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से 9 दिन और शस्त्र सूत्र के हिसाब, और हम लोग को क्लिनिकल लेवल पे चौथे दिन में रिस्पांस आ जाता है। तो सर इसके पीछे क्या क्या बस्ती चौथे दिन में न्यूरॉन पे पहुंच जाती है या अस्थि की तरफ, ऐसा कैसे बताइए सर इसके बारे में कुछ। This I have told this Snehapana, with the 4th day of Snehapana, patient is able to walk. That means the disease is not cured completely, but आराम मिल गया, वो ठीक है. 4th day of Snehapana. In the same manner, Vasti also giving 4th day of Vasti is giving relief to the patient. But complete relief is not possible by this Vasti itself. Only Vasti we are doing, complete relief is not possible. And we are trying to correct in the root level itself. If we are following a line of treatment within 21 days or 28 days, then the reoccurrence can be prevented. So all these line of treatments are to be carried out. Then reoccurrence can be prevented. And I told the lifestyle also to be corrected to the patient in future. Both these things are there, then reoccurrence can be prevented. So our vastis are acting on Asti Dhatu and Majja Dhatu. Then not that's why we are getting that much result. So I don't know how to say that this it is reaching up to Asti Dhatu or Majja Dhatu. How we can say that? Anyway, patients are getting relief by that. Then the reoccurrence is reduced. That's why we can say that our principles are correct and our line of treatment is best. Therefore, patients are attracted towards Ayurveda. The person first, most of the time we are observing nowadays modern doctors are advising surgery to sciatica patients. If you are not conducting this surgery within 48 hours, then there is chance of getting shoshana to your legs and your numbness will be there. You cannot walk properly. Your urine, stool, etc. will be problematic. In that manner, modern doctors are saying, and immediate surgery is advising. The person, those who are consulting with any Ayurvedic doctor or any other person of his home, that person is denying it and coming to Ayurveda for these therapies. That person is getting good relief. In the now last day I have observed the person was working in allopathy hospital. Compulsorily they have did a operation. Afterwards the person is unable to walk. Some problem might have occurred in the operation and the person is unable to walk. So that unknowingly so many are getting in trouble. So we have to natural condition. If operation is done, it is very difficult to treat with the Ayurvedic medicines. So if your operation is not done, natural manner, we can correct sciatica type of problems. No problem. If person is coming with lying posture, unable to stand, then also we can correct it. First we have to assess it is sciatica only, then it is very easy to correct it. So thank you, sir. Arvind Saxena, you got your answer. So it's only now 12 to 14 minutes is remaining. So if you have any question, आप अपना सवाल 12-13 मिनट है, 1-2 सवाल हम बस लेंगे आपसे. सर ने इतने बढ़िया से आंसर दिया. ये आपने हैंड रेज किया पर आपका नाम नहीं आ रहा है. अपना नाम बताइए जी. 5E3EB4C8 जी. फिर हम पूछा तबानी जी. परिचय दीजिए अपना जी. सर myself Dr. Neha speaking. नेहा जी कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं कोलकाता से बोल रही हूँ. कोलकाता से जी. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि इन केस आपके पास ज्यादातर पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिन्हें ऑलरेडी सर्जरी करा चुके होते हैं, या तो स्पाइनल सर्जरी या फिर नी रिप्लेसमेंट, और फिर उन्हें पेन और स्वेलिंग्स वगैरह ऐसे वाले कंडीशंस आती हैं. तो क्या ऐसी कंडीशंस में हमें पंचकर्मा सजेस्ट करना चाहिए जब उनके प्लेट्स डली रहती हैं उनके नी में या फिर स्पाइन में? तो इज इट पॉसिबल टू कंडक्ट पंचकर्मा एनी प्रोसीजर? देखिए, if the person is coming to our place after surgery, that itself is a thing that surgery is not getting, by surgery the person is not getting complete relief. That the person has understood that I have not got complete relief by surgery. So that person is coming to us means
we can tell them, if you have not undergone surgery, our results are more precious, that it will give good results to all patients. But after surgery, we may not give complete relief. Anyway, some relief we can provide. That may around 50 to 70% of relief we can provide by after surgery also. But complete relief, just like a 100-mark question is there, the patient came with 75 mark, then if operation is not done, the person is getting the score of 0. That is a great thing we have observed in Gridrasi or sciatica cases. So that much 0 may not come to this after surgery patients. It may remain to 20 in that manner. Sometimes score may be 20. But if the patient is coming with 50 or 60% of mark, so that person is also getting relief. So even plate is kept, back pain, whatever it may be, we can provide our treatment, but we cannot expect complete relief just like those who have not undergone surgery. That we cannot expect. Anyway, by saying all the things, all the truths, we can admit the patient and we can provide medication to that person. And in some cases, we have to take a little bit caution while rubbing, massage, etc. That only is needed. Snehapana, etc. is not a problem. Any person we can do. But while doing massage, etc., we have to take a little bit care. Thank you, sir. Now, Dr. Usha Tawani, you ask your question. Let introduce yourself. Yeah. नमस्कार सर, मैं डॉक्टर उषा तबानी गुजरात गांधीनगर से बोल रही हूँ। आपका बहुत अच्छा मुझे इंफॉर्मेटिव मिला है, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। मेरा क्वेश्चन है सर, न्यूरोलजिया पेशेंट है 10 साल से और उसका कुछ ऑपरेशन वगैरह करे तो हमारे में पंचकर्मा में क्या करवाना चाहिए सर? क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम क्या था? न्यूरोलजिया मीन्स कहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम है? एक्चुअल में हेडेक एंड नमनेस वगैरह भी बहुत ज्यादा रहती है सर, और कभी कभी ऐसा लगता है कि फेशियल पैरालिसिस जैसा होता है ना, उस टाइप का भी पेन रहता है। तो उसमें सर क्या करना चाहिए? देखिए, ये वात व्याधि का टाइप कंडीशन है, न्यूरोलजिया, दैट इज व्हाटएवर सिम्पटम्स यू टोल्ड, दैट ऑल आर कमिंग अंडर वात व्याधि. First, you have to correct the nidana of that patient. If he is not taking food in time, etc., that is to be corrected. If achar, etc., are taking more quantity, that is to be reduced. And sufficient quantity of food is not taking, that is to be corrected. And oil, etc., that is milk, ghee, etc., are not using, that is to be corrected. That is the first thing you have to advise. And whatever Vadasyopakrama, Sneha, Seda, Samshodhana, Mrudu, Sneha, Sweda, Samshodhana, Mrudu Samshodhana. These are the line of treatment for Vadavyadhis. So these all things can be done to the person. In my opinion, headache, etc., will be corrected with proper Snehapana. If you are not able to take a quantity of taila or ghee, then around 20 or 30 ml of ghee or taila can be used daily. In the morning or in night time, any time, there's a shamana dosage they can use. That also will give good result to the patient. Is to be reduced to the person. That only needed. Thank you, sir. So I think that yes, thank you. Gaurang is there. Gaurangi ji, please introduce yourself and unmute yourself and ask your question. It's a short. Yeah. Sir, myself Dr. Abhilasha Mahakarkar. Okay, Abhilasha ji. From Bhandara. सर, जो वात व्याधि में जो आपने अभी भी बताया है कि संशोधन, स्नेहन, स्वेदन, मृदु संशोधन करना पड़ता है, तो कोई भी वात व्याधि अगर आती है तो अपने को पाचन दीपन से स्टार्ट करना चाहिए ना? पाचन दीपन, स्नेहन, फिर बाद में स्नेहन, अभ्यंतर स्नेहन अगर देना है तो पाचन दीपन करना पड़ेगा ना सर? हेलो, यस, ये देखिए, वो पेशेंट को एक पेशेंट को असेस कीजिए, एक पेशेंट को असेस करके उनका खाना पीना, कोष्ठ, अग्नि, ये सब आप पूछ लीजिए। उसी के अनुसार स्नेहपान का योग्य है तो तुरंत आपको स्नेहपान शुरू कर सकते हैं। स्नेहपान
योग्य नहीं है तो आप पाचन दीपन दीजिए, दीपन पाचन दीजिए, उसके बाद स्नेहपान शुरू कीजिए। ऐसे वाला सभी ट्रीटमेंट पर करना पड़ता है। तो ये पेशेंट आ जाएगा तो उनका अग्निदीप, अग्नि के बारे में, पोस्ट अग्नि, ये सभी के बारे में एक असेसमेंट करके आप लोग करना है। क्योंकि एक बहुत मंदा अग्नि का पर्सन है, तुरंत आप स्नेहपान शुरू किया गलत हो जाएगा। ठीक है, उन लोगों में भी तुरंत नहीं करना है, वो भी ठीक ठाक काम नहीं करेगा। तो उनका अग्नि को पहले ठीक कीजिए, कोष्ठ को ठीक कीजिए, उसके बाद शुरू में पाचन दीपन वाला देते हैं, उसके बाद आप स्नेहपान करके बाकी सब कर दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। लास्ट क्वेश्चन पंकज शर्मा जी आप पूछ लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका जी। पंकज जी, पर परिचय दीजिएगा अपना, परिचय। डॉक्टर सर, मैं डॉक्टर पंकज शर्मा यूपी से हूँ, इटावा से। सर मेरा दीप सर से क्वेश्चन था सर कि सर जैसे आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हो सर गृदसी में, तो इसमें जैसे एमआरआई करा के पेशेंट आता है तो उसमें लंबर और सैक्रल पोजीशन में कंप्रेस नर्व का सिम्टम्स लेके आता है एमआरआई में, या बल्ज हो रहा है, तो उस कंडीशन में जैसे हम लोग पंचकर्मा सजेस्ट कर देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं, पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। बट पेशेंट हमसे पूछता है कि सर कब तक ट्रीटमेंट चलेगा, हमें क्या आगे करना है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या उसको सजेस्ट करना है आगे के लिए, कितने दिन तक उसका ट्रीटमेंट चलना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग? एक्चुअली ऐसे वाला पेशेंट बहुत आते हैं, वो बल्ज किसी जगह पर भी होने पर ट्रीटमेंट में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं। हम स्नेहपान ये सब करने का एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करेगा, नहीं है तो अभ्यंग पत्रपिंड सेद ऐसे वाला ट्रीटमेंट करेगा, पस्ती भी साथ साथ करेगा। ऐसे वाला ट्रीटमेंट करके उनको रिलीफ मिल गया, उनका प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, उस समय हम अस्पताल से डिस्चार्ज करते हैं, 21st डे और 28th डे में हम डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन वो आदमी को बोलना होगा, वो वेट उठाने का काम है तो इतना जल्दी से जल्दी नहीं करना है, वो 1 महीने तक अच्छा रेस्ट लेना है। तो उनको खाने पीने में वो समय सब कीप करने के लिए बोलना। क्षीर पौधा रेगुलर यूसेज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो एक्चुअली रसायन का काम करते हैं। क्षीर पौधा, ये मैं बोला था, बेला मूला शुंठी ये सब डालकर आपको क्षीर कोद बनाकर पी सकते हैं, वो रेगुलरली यूज कीजिए, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वेट उठाने का काम है तो आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, वो जल्दी से जल्दी ऐसे नहीं करना, अकेला करना, ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान से कीजिए। एक बार प्रॉब्लम हो गया तो ऐसे वालों को फिर प्रॉब्लम होने के चांस है, वो थोड़ा ध्यान से करने के लिए बोलना। अगर क्षीर कोद का रेगुलर यूसेज करेंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होते हैं। और ऑयल का एप्लीकेशन, एक्चुअली हमारे आयुर्वेद में बोला है अभ्यंग माजरे नित्यम, तो एक आदमी अभ्यंग जरूर करना है। एक बार वाद व्याधि आया, वो आदमी जरूर अभ्यंग जरूर करना है, ऐसे है तो उनको बाद में वाद व्याधि नहीं आए। ऐसे है, ये सब ठीक करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा आयुर्वेद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखना है, वो बल्ज व्हाटएवर इट मे बी, इट विल बी करेक्टेड। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत थैंक यू। अभी आपने इतने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए। यूजुअली देखिए, आप सभी चिकित्सक हैं या प्रैक्टिशनर्स हैं, आपके छोटे छोटे मन में आ रहे प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर दीप ने कितनी बढ़िया से आपको दिया, और तकरीबन हमारा 1.5 घंटा ये सेशन चला और आपको पता भी नहीं चला। सर आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से, यहाँ पे पूरे भारत से वैद्य लोग जुड़े हैं, कोई उत्तराखंड से, कोई हिमाचल से है, कोई पंजाब से है, कोई अभी गुजरात से हैं, कोई तमाम भारत के हर कोने से लोग हैं, और आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी और इतने ब्यूटीफुली आपने इंटरेक्ट किया। आपका सभी आभार कर रहे हैं यहाँ चैट बॉक्स में। और हम सर उम्मीद करते हैं कि हमारे ये चिकित्सक हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, इनको वक्त नहीं मिलता और न इनके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपसे किसी से अपनी चीजों को पूछ सके। तो आपने सर यहाँ हमारे इस आयुष दर्पण के मंच में आप कई बार आए हैं सर, आपने कई लेक्चर्स दिए, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं सर के लेक्चर्स को। तो ये इंटरैक्टिव सेशंस आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, और सर के ये लेक्चर्स से आपको बहुत जानकारी मिली होगी। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में फिर आपसे सर कांटेक्ट करेंगे और किसी और विषय पर फिर हम चर्चा करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, ताकि आयुर्वेद आगे बढ़े और आयुर्वेद की नॉलेज अपडेट होती रहे। आपका बहुत बहुत आभार सर, अभिनंदन सर हमारे साथ। बीच में आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था सर, अब स्वास्थ्य ठीक है?
ठीक है ठीक है। अब आपका एक सेशन ये बहुत पहले प्लान था, तो सर का थोड़ा सा बीच में स्वास्थ्य में प्रॉब्लम था, तो अभी देखिए इन्होंने पूरा लेक्चर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार सर, नमस्कार, शुभ रात्रि। आपको बहुत बहुत आभार अभिनंदन। नवीन जोशी जी, आपने बहुत मौका दिया आयुर्वेद को। सर हमने मौका नहीं दिया सर, आपको यहाँ पे पाके धन्य हो गए ये सब। आपको आयुष दर्पण बहुत ऊंचाई में आयुर्वेद को लेकर जा रहा है। आपको धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा तरह धन्यवाद दे रहा हूँ। धन्यवाद, गुड नाइट सर।